हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल इन द सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस बीपी 703 टीटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस और कैसे ये कंडक्ट करनी है या फिर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करना है रिगार्डिंग इन द हॉस्पिटल टू ऑब्टेन द नॉलेज। द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटीज इन द अमेरिकन हॉस्पिटल। देखिए, यहाँ पे एक अमेरिकन हॉस्पिटल्स में दे आर इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन मेडिसिन। देन दे आर टीचिंग स्टूडेंट नर्सेस ऑल्सो, licensed practical nurses program, as well as training of technologist, physiotherapist, dietitian, then administrative resident, social service workers and pharmacist। तो ये सभी चीजें ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अगर हम कंसीडर करें इन हॉस्पिटल, तो ये सभी मतलब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल्सो ऑफ द टेक्नोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, then also of dietitian, this all comes under the roof of hospital. That means hospital has to conduct such a education and training program in a hospital. Then, as a matter of fact, the hospital pharmacist, because of his education and training and experience, they can take part in both internal and external teaching activities. देखिए, यहाँ पे फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऑलरेडी दे आर हैविंग द गुड एजुकेशन एंड ऑल्सो दे हैव गॉन थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस दे कैन पार्ट इन बोथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो hospital pharmacist, he can take part in internal as well as in external teaching activities. Now, internal teaching program, they are considered to be those which involves the training of the student nurses, the conducting of seminar in therapeutics and of graduate nurses, then also house staff members and medical staff, senior medical staff, and also that means यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग इन ये सभी हम कंसीडर कर सकते हैं इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम में। देन असिस्टिंग इन द एजुकेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट। देखिए, असिस्टिंग इन education of undergraduate pharmacy student, then we can conduct the refresher course for the graduate who have finished their degree in the pharmacy. For them we can conduct the refresher course, and residents in hospital administration, रेसिडेंट जो भी रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इन सब के लिए ये सभी चीजें ट्रेनिंग एंड वी कैन असिस्ट देम इन अ प्रॉपर टॉपिक with the refresher course or with the seminars in a particular area. So this comes under the internal teaching program. Then external teaching program में क्या है, considered to be those in which the hospital pharmacist is the guest lecturer. यहाँ पे hospital pharmacist will act as a guest lecturer or speaker or possibly the sole instructor in charge of a specific course in a school or college. For example, external type program are courses of colleges of pharmacy. Then we can consider यहाँ पे भी हम refresher course consider कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे the speaker that will be the hospital pharmacist under the auspices of the college of pharmacy, seminar, then also institute of convention which are sponsored by the professional association. देखिए, बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन भी रहते हैं जो कुछ कन्वेंशन है या फिर सेमिनार है, गैदरिंग है, कॉन्फ्रेंसेस है, ये सब के लिए ग्रांट भी मिलती है। जैसे रिफ्रेशर कोर्स है तो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे आर प्रोवाइडिंग सच ग्रांट टू अरेंज सच रिफ्रेशर कोर्स टू द कॉलेजेस ऑल्सो। तो ये सब प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम्स को हम कंसीडर कर सकते हैं एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम्स। नाउ इन केस ऑफ इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम वी विल सी it includes training of student nurses, seminar for graduate nurses, house staff and medical staff, then training undergraduate student in hospital pharmacy, patient teaching program, training clinical pharmacist, ट्रेनिंग रेसिडेंट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सभी चीजें इंक्लूड होंगी इंटरनल टीचिंग प्रोग्राम में। वी विल सी वन बाय वन, ये हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्सेस, स्टूडेंट मतलब जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें जो भी स्टूडेंट्स है, सो रिगार्डिंग दैट देयर विल बी द ट्रेनिंग दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट।
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड टीच स्टूडेंट नर्सेज द एंटायर कोर्स इन फार्मा स्पेशली। देखिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड फार्माकोलॉजी ये दोनों टॉपिक के ऊपर जोर दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द इंडिविजुअल इज कैपेबल एंड हैज सो इम्प्रेस द नर्स एजुकेटर्स बाय हिज डेली एक्शन एंड डीड्स ही शुड बी इनवाइटेड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, इफ ही इज कैपेबल एंड he can deliver expert talk especially in the subject of pharmaceutical calculation and also on a pharmacological topic, then they are invited और उनको बुलाना चाहिए या फिर उनको बुला के स्टूडेंट नर्सेज के लेक्चर्स या फिर सेमिनार वी कैन अरेंज। द प्रिपेयर्ड लेक्चर्स शुड बी अपडेटेड। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, वॉट एवर द लेक्चर्स दे आर डिलीवरिंग टू द स्टूडेंट नर्सेज इज that should be updated each year to include the latest development in the pharmacology, and also the references to weight and measure should be in accordance with the hospital's drug formulary। देखिए जो भी ड्रग फॉर्मुलरी हॉस्पिटल यूज कर रही है उनके मुताबिक यहाँ पे वेट्स एंड मेजर उनको पढ़ाना है। एंड ऑल्सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दे कैन कंसल्ट द वेरियस टेक्स्ट बुक इन अ फार्माकोलॉजी विच आर रिटन फॉर द बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये पूरा चीज है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट नर्सेज जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए वी कैन हैव द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है स्पेशली इन कैलकुलेशन एंड इन इकोलॉजी दे कैन गाइड टू द नर्सिंग स्टाफ। देन सेमिनार फॉर ग्रेजुएट नर्सेज, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ। Although most pharmacists disseminate information to the member of the medical and nursing staff through a pharmacy publication, there is still need for the direct and personal presentation which is afforded by conducting a seminar on the latest available therapeutic agent to the medical staff। मतलब जनरली क्या है कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है टू द ग्रेजुएट नर्सेज और हाउस स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, देन जनरली द पब्लिकेशन दैट इज यूज, पब्लिकेशन के माध्यम से हम डायरेक्टली ये कम्युनिकेट कर सकते हैं टू द हेल्थ केयर वर्कर्स। बट ऑल्सो द कंडक्टिंग ऑफ सेमिनार ये भी एक दूसरा तरीका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल वे एंड ईजी वे टू कम्युनिकेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक एजेंट टू द मेडिकल स्टाफ। ये हम इजीली कन्वे कर सकते हैं बाय अरेंजिंग द सेमिनार। आइडियली द टॉक शुड बी शॉर्ट। देखिए यहाँ पे जब भी कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या फिर प्रेजेंटेशन इसके बारे में है, तो वॉट एवर द टॉक इज देयर इट शुड बी शॉर्ट, नॉट ओवर 20 to 25 मिनट, विदिन 20 मिनट इट शुड बी कंप्लीटेड एंड कॉन्साइज, एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली या फिर अच्छी तरीके से इट शुड बी कन्वेड टू द पर्टिकुलर person। The subject should be covered in a such a way that the audience can integrate, that means they can combine the information, all the facts, and thereby obtain an appreciation of the many facts of the drug therapy। and whatever the time should be allowed, देखिए यहाँ पे टाइम देना है, लेकिन the time that should be allowed for the discussion healthy होना चाहिए। इसके ऊपर से डिस्कशन के ऊपर से प्रॉपर इंफॉर्मेशन है that will be conveyed to the health care provider। तो यहाँ पे एक सेमिनार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट वे है फॉर द कम्युनिकेशन। द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डेवलप्ड एन आउटलाइन ऑफ 4 लेक्चर। देखिए अमेरिकन सोसाइटी है तो उन्होंने एक आउटलाइन प्रिस्क्राइब किया है टू अरेंज सच अ लेक्चर विच में बी प्रेजेंटेड बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू द रेसिडेंट स्टाफ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट उन्होंने लिखे हैं रिगार्डिंग द 4 lectures it includes different things। First we will see in a lecture 1 it concerns with the orientation to pharmacy service and covers location of the pharmacy, description of the physical plant, then personal hours of operation, then services provided by the department, hospital policies that governing, that means जो भी hospital की policies है regarding formulary, use of generic name, use of metric system, use of abbreviation, then research drugs, automatic stop order क्या है इसके बारे में information, then discharge medication and how to order the narcotics and liquors। So this all the information that should be gathered and delivered to the healthcare provider in a lecture 1। Then in a second lecture this is devoted to the philosophy and goal of formulary system। मतलब यहाँ पे formulary system उसके बारे में information देना है। Then in the course of the lecture the hospital pharmacist should emphasize
द कंपोजिशन एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, मतलब पीटीसी क्या है और उसके स्कोप क्या है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इनटू अ लेक्चर 2. Then lecture series 3, this lecture is suggested to take the form of a prescription clinic. Prescription के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है. And the course of the lecture, the pharmacist should stress in central or state laws concerning hospital regulation governing the prescription. मतलब जो भी laws है regarding the prescription उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है. देखिए कुछ एक्सपीरियंस जो भी रहता है वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. The past experience has also demonstrated that a short period of time devoted to a group criticism of prescription. देखिए यहाँ पे क्या क्या एरर हो सकती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. And that can be projected on a screen which contains illegible writing, the non-standard abbreviation, misplaced decimal point, misspelling of drug names and a mixture of English and Latin direction. देखिए बहुत बार English and Latin दोनों डायरेक्शन का यूज एक ही प्रिस्क्रिप्शन में हो जाता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन. एंड इन एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी इन राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. देखिए यहाँ पे स्पेशली द सिग्निफिकेंस और वी कैन से द स्पेशल स्ट्रेस दैट इज गिवन टू द एक्यूरेसी इन राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. तो इसके बारे में यहाँ पे जो भी है इंफॉर्मेशन या फिर इसके बारे में जो भी स्पेशल गाइडेंस है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सो this is about the lecture 3. Then in a lecture 4, it is reserved for the discussion of any topic of current interest of the staff. The suggestive topic that can be cost of medication, then incompatibilities of intravenous fluid or other injectable drugs, the new drug regulation and amendments to the Drug and Cosmetic Act rule. Then also we can include the Pharmacy Act. Then we can have the drug interaction topic. देखिए ये मतलब ये that should be suggested or that should be by the interest, whatever the interest, जो भी स्टाफ है जो भी ट्रेनिंग ले रहा है तो उनका क्या स्पेशल इंटरेस्ट है उनके ऊपर से ये लेक्चर फॉर सिलेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज रिगार्डिंग द सेमिनार फॉर ग्रेजुएट नर्स, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ. देन ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेनिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी. लेकिन यहाँ पे इंडिया में कुछ अलग सिस्टम हमारा है, इसके कारण ये सब नहीं हो रहा है. देखिए यहाँ पे ओनली अ फ्यू कॉलेज ऑफ फार्मेसी हैव डेवलप्ड वर्किंग अरेंजमेंट विथ हॉस्पिटल फॉर टीचिंग पर्पज. इवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी रन इन यूनिवर्सिटी. देखिए यूनिवर्सिटीज जो भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में उनमें जो जो कॉलेज चल रही है विच ऑल्सो हैव अ लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल but in which the college have no connection with the pharmaceutical services. देखिए यहाँ पे वेरी लेस कनेक्शन है. जो भी कॉलेजेस रन है या फिर जो भी कॉलेजेस है इंडिया में तो उनका टाई अप होना चाहिए हॉस्पिटल के साथ और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट को भेजना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे इन इंडिया द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट और यहाँ पे जनरली बहुत लेस है ये सब. Surprisingly, it is to be noted that in India today, though many universities have incorporated hospital pharmacy as a major subject. देखिए बहुत सारी फार्मेसी कॉलेज में भी हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाया जाता है. The teaching is done in college only in isolation from the hospital. That is not attached with the hospital for a very good reason that almost none of the hospital and especially the government and teaching hospital have no hospital pharmacy services. देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस नहीं है एंड दैट इज प्रेजेंट एंड दैट वी कैन फाइंड इन यूएसए एंड द यूके. यूएसए एंड यूके कल्चर में ये सभी हॉस्पिटल फार्मेसी का कल्चर है, कॉलेजेस के साथ में अटैच है. तो यहाँ पे स्पेशली वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम ऑफ द कनेक्शन विद द कनेक्शन ऑफ द कॉलेज विद द हॉस्पिटल. But over here also the American Association of College of Pharmacy and American Society of Hospital Pharmacy, they have mentioned some of the skill, the 6 specialized area of competence that should be considered in developing a curriculum for the hospital pharmacy. So what special characteristic that should be present in a hospital pharmacy or how the curriculum should be developed? A thorough knowledge of drug and their action. देखिए जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है या फिर जो भी स्टूडेंट है दैट इज पास फ्रॉम द हॉस्पिटल फार्मेसी कोर्स तो उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए.
knowledge about the drug and their action, ability to develop and conduct a pharmaceutical manufacturing program, then intimate knowledge of the control procedure, ability to conduct teaching and in-service training program, then ability to conduct and participate in research, ability to administer and manage a hospital pharmacy। तो ये सभी स्किल है जो आइडेंटिफाई किए अमेरिकन एसोसिएशन ने, या फिर जो भी उनका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उन्होंने ये डिराइव की है। सो दिस शुड बी दिस सच अ स्किल दैट शुड बी विद द स्टूडेंट्स। नाउ देन पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम इन वन स्टडी। देखिए पेशेंट टीचिंग के लिए एक स्टडी हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक स्टडी में द पेशेंट नॉलेज दैट हैज बीन चेक्ड and some drug or the prescribed drug regimen that was assessed in 78 patients randomly chosen and interviewed at home within 6 to 9 days after hospital discharge। एक बार पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसके बाद ये सब स्टडी हुई है। and the study that includes the following area, that means the question regarding the name and purpose of the medication, precaution to consider while taking the medication, and other medication, foods, beverages to avoid when the patient is taking the drugs। तो इसके बारे में एक स्टडी हुआ है, तो उसके ऊपर से the study that has concluded that a considerable lack of knowledge about the prescription medication। देखिए यहाँ पे पेशेंट को जो भी प्रिस्क्रिप्शन बाद में दिया गया है when he has been discharged, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। The data shows that this was apparent in view of the fact that 52% could not determine the length of the drug regimen, कितने दिन तक लेना है ये मालूम नहीं है। 23% were not aware of why medication had been prescribed to them, क्यों दी गई है ये मेडिकेशन उनको, क्यों दिया है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड 56% did not know the name of the medication, उनको मालूम ही नहीं है कौन सा मेडिकेशन। देखिए सेम अगर हम कंसीडर करें, आप भी अगर ये इनको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि बहुत सारे गांव में या फिर हम इवन इन सिटी ऑल्सो द पर्सन इज एजुकेटेड इवन दो दे डू नॉट नो what have been prescribed to the particular person। then 56% were not given instruction as how to administer the medication। देखिए ओरली लेना है या फिर कौन सी मेथड से लेना है इसके बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। सो दीज आर द लैकिंग थिंग्स वी कैन से, एंड दैट्स व्हाई द टीचिंग, पेशेंट टीचिंग दैट इज रिक्वायर्ड। So, for what we can do for the patient teaching, hospital who have recruited clinical pharmacists to their staff have developed extensive program for the orientation of the patient on the subject of drug used both in the hospital and in the patient's home। मतलब हॉस्पिटल में अगर इन पेशेंट है या फिर आउट पेशेंट है, दोनों के लिए ड्रग्स है कैसे यूज करनी है उसके बारे में स्पेशली प्रोग्राम दैट शुड बी डिजाइन, एंड सच ए प्रोग्राम इट शुड कंसिस्टेड ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। देखिए यहाँ पे पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग अगर प्रॉपरली होगा तो पेशेंट को थरली नॉलेज रहेगा अबाउट द मेडिसिन। देन डेवलपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन वी कैन गिव द ब्रोशर, देन ग्रुप कॉन्फ्रेंस भी अरेंज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द टेलीविजन प्रेजेंटेशन डायरेक्टली। देखिए कुछ मेडिसिन या फिर नेब्यूलाइजर जैसे रहता है, तो नेब्यूलाइजर को कैसे यूज करना है इसके बारे में डायरेक्टली वी कैन प्रिपेयर द एडवर्टाइज, और डायरेक्टली वी कैन गिव द टेलीविजन प्रेजेंटेशन डायरेक्टली, और ऑल्सो वी कैन प्रमोट दैट ऑन अ यूट्यूब, डायरेक्टली वी कैन सेंड द लिंक टू द पेशेंट। तो ये सब चीजें हैं कि इससे पेशेंट को थरल इंफॉर्मेशन या फिर by this way we can guide or we can teach to the patient। और यहाँ पे अगेन द क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आफ्टरवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड वर्क क्लोजली विद द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन फैकल्टीज एज वेल एज वेरियस मेडिकल स्टाफ स्पेशलिस्ट while conducting such program। देखिए यहाँ पे अगर हमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग देना है तो ही हैज टू वर्क विद द मेडिकल स्टाफ, और स्पेशलिस्ट जो भी रहते हैं उनके साथ में जैसे काम करेंगे एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और they will be educated by such things। In clinical pharmacy training, specialization within the broad area of clinical pharmacy, that means pediatrics, clinical pharmacology, toxicology, drug information analysis and interpretation, infectious disease and geriatric,
should be included. तो ये सभी चीजें हम स्पेशलाइजेशन में इंक्लूड कर सकते हैं if we want to give training to the clinical pharmacy, clinical pharmacist. तो ये सब चीजें यहाँ पे, या फिर we have to focus on a particular area to give the education to the clinical pharmacist. The content related to the medical record, देखिए यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, related to medical record, drug history procedure, then patient drug profile program, drug information center. He should have the information about the drug information center, then poison control center, adverse drug reaction program, and opportunity to interface with their disciplinary healthcare personnel such as the physician. देखिए उनके साथ कैसे काम करना है, या फिर we need to give the opportunity with the to correlate the physician, dentist, nurses, dietitian, and therapist. That should be included for the training purpose. तो ये सब specialized person को भी हम यहाँ पे we can invite them to teach, to give the proper guidance to the clinical pharmacist. देखिए यहाँ पे जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करेंगे तो उनको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग या फिर ड्रग हिस्ट्री प्रोसीजर और पेशेंट ड्रग प्रोफाइल प्रोग्राम, ये सच टाइप ऑफ प्रोग्राम वी कैन अरेंज इन द हॉस्पिटल. देन द ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट नीड नॉट बी लिमिटेड टू हॉस्पिटल प्रॉपर बट मे इंक्लूड द सैटेलाइट हेल्थ केयर सेंटर, परस्यूइंग होम, देन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, होम केयर प्रोग्राम एंड क्लिनिक्स. देखिए यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट को एजुकेट करना है तो इसके लिए हमें आउट ऑफ हॉस्पिटल ऑल्सो वी शुड हैव सच अ प्रोग्राम, and by that the clinical pharmacist can improve their knowledge. Then training resident in hospital administration. Candidates for master of hospital administration serve a residency in an approved institution under the guidance of a competent instructor. यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर रहे हैं या फिर जो भी रेसिडेंट है, so they can be guided by a instructor that will be approved by the institution. And while serving this residency, the newly selected administrator is exposed to the function and operation of every department in the hospital. हॉस्पिटल के जो भी फंक्शन है उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा. देन बिकॉज द यंग एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्म्स हिज ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कोप ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट as well as the responsibility of the hospital pharmacy. तो फार्मेसी कैसे काम करेगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, स्कोप क्या स्कोप है, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है that should be provided to train the residents in a hospital administration. यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. आउटलाइन द फॉलोइंग आउटलाइन टीचिंग में बी एडॉप्टेड विथ एन मॉडिफिकेशन. यहाँ पे एक पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स आइडेंटिफाई किया गया है टू ट्रेन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट वन, द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ ड्रग. हॉस्पिटल फार्मेसी का डेवलपमेंट जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे. देन इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू ड्रग ऑन द फार्मासिस्ट स्किल, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और उनका इन्फ्लुएंस क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. Then influence of all level of pharmaceutical education program that should be considered in a lecture 1 series इसको हम बोल सकते हैं. That is on a development of hospital pharmacy. Then second one regarding the information about the organization hospital. Already हमने एक लेक्चर में ये सब कवर किया है. Regarding the establish hospital department or purchase and outside service personnel. What will be the education and qualification, department organization, then what will be possibility or dual function in smaller hospital, for example pharmacist purchasing agent, pharmacist central sterile supply coordinator. मतलब dual functioning कैसे करेंगे इसके बारे में information. Interdepartmental relationship, administration, nursing, laboratories, miscellaneous, इस ये सब के बारे में information. Then special relation to medical staff, control of research drug, PTC, and also the pharmacy bulletin, इसके बारे में information that should be provided into the organization. Then physical facilities and design, general consideration, location and size, then dispensing area of inpatient, outpatient, ancillary supplies, then compounding areas,
extemporaneous compounding, then bulk compounding, sterile preparation, storage area. In storage, again, it will be divided into the general, narcotics, alcohol, and special. Then administrative area, offices, and library. So this all the information that should be provided to the hospital, the resident in a hospital administration. Then the fourth one, that is the responsibility of the pharmacist. क्या responsibility है administration के बारे में, professionally, legally observation of central and states law that pertaining to drug, then local rules as they apply to alcohol, narcotic, dangerous drug, poisons and pharmacy. तो इसके बारे में जो भी लीगल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हमें स्टडी है या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है that should be provided. Then ethical, the patient, the physician, the hospital and the community, ये सब के बारे में information that will come under the responsibilities of the pharmacist. Then the hospital formulary system, इसके बारे में पूरी information, the guiding principle, philosophy of PTC, the national formulary and the private formulary, then its advantage and disadvantage that we can include in the hospital formulary system. Then source of information, the Central Drug Control Organization, the Pharmacy Council of India, the Indian Pharmaceutical Association, Indian Hospital Pharmacist Association and the Federation of Chemists and Druggists of India. देखिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रेसिडेंट है उनके बारे में उनको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए और इसके लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, he can guide, he can give the training in this all particular area. Then external teaching program, यहाँ तक हमने जो भी देखा that was in an internal teaching program. Now external teaching program that is consist of any teaching activity performed by the pharmacist outside the hospital. Hospital के बाहर जो भी teaching program है that will be come under the external teaching program. The hospital pharmacist may and usually does teach courses other than hospital pharmacy. देखिए hospital pharmacist also they can teach such a program. This include the product development, preparation of the parenteral product, then sterilization technique and pharmacology. So this also this topic that can be covered by the hospital pharmacist and this will be known as a external teaching program. Then the participation in seminar, institutes, refresher courses is another way in which the hospital pharmacist may carry on a teaching program. देखिए ये यहाँ पे दो तरीके से, एक तो रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड करना, ठीक है, बाहर जाके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है he will attend such a refresher course, that is also external teaching program and he can give the he can be act as a speaker also in a refresher course. So these both are the external teaching program. Then participation in the activity of nursing, dietary, oxygen therapy and medical technologist association does much to improve the professional statute of the hospital pharmacist. मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, डाइटरी, देन ऑक्सीजन थेरेपी, देन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, इनके द्वारा भी कुछ प्रोग्राम वो लोग भी अरेंज करते हैं. तो यहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन we can have the information about the healthcare system from such a different we can say कि यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, they can participate. Then teaching in its broadest interpretation need not to be restricted to the personal lecture but may include the preparation of manuscript. देखिए यहाँ पे एक दूसरी चीज है, preparation of manuscript, that means the for a research or the publication in the professional press. यहाँ ये भी एक एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम में हम कंसीडर कर सकते हैं. अगर कोई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, he is doing the research work and if he is publishing his paper in any journal. The subject matter may consist of the result of original scientific research in product development or comprehensive literature survey. देखिए यहाँ पे research regarding the product development that can also be published and also they can do kind of survey in particular area of hospital pharmacy or the result of a study which improves the managerial and service rendering aspect of the department. मतलब managerial service है, इनके बारे में ये सब
that can have the knowledge about this managerial service and also service rendering aspect of the different department है उनके बारे में जो भी information है ये यहाँ से मिल सकता है. तो this will come under the external teaching program for the hospital pharmacist. इन इंडिया देखिए यहाँ पे इंडिया में कुछ हॉस्पिटल ऐसी है कि वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज में प्रमोट कर रहे हैं. जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वेलोर ग्रांट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जसलॉक हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल इन मुंबई. दे encourage their pharmacists for this type of activities, and also the Indian Hospital Pharmacist Association members do participate in some of the direct or indirect educational activity, especially during the annual session of the Indian Pharmaceutical Congress IPC. Every year ये held होता है इंडिया में. एवरी ईयर ये अलग अलग सिटीज में अरेंज होता है. तो यहाँ से भी जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है दे कैन अटेंड सच अ प्रोग्राम एंड दे कैन एक्वायर द नॉलेज एंड दिस कम अंडर द एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम. सो नाउ we finish internal teaching and external teaching. One more thing I want to highlight, that is the that comes under, we can say ये internal teaching program भी है और external teaching program में भी हम इनको consider कर सकते हैं. That is drug abuse teaching program. देखिए drug abuse, drug के related जो भी information है और nowadays the drug abuse to how to reduce the drug abuse or how to stop the drug abuse, like this information that should be required for the hospital staff also and to the general public also. So that's why we can say it is the internal and as well as external teaching program. For example, hospital and clinical pharmacists can make a worthy contribution toward the education of the hospital staff, employee, patient and student that is enrolled in the various teaching program on the issue of the drug abuse. यहाँ पे we can consider hospital staff को भी हम include कर सकते हैं to give the education regarding this. Then employees, then patient and student that are enrolled under the hospital in a different teaching program. देखिए यहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट है या फिर नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर रेसिडेंट है, रेसिडेंट स्टाफ है, तो ये सभी लोग है they can have the knowledge about the drug abuse. Then what pharmacist can do? He can display of drug abuse. He can prepare the display of drug abuse and can be prepared for showing in the hospital, local school and in the library of the city or town. देखिए यहाँ पे ड्रग एब्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो स्कूल में, हॉस्पिटल में या फिर सिटी की जो भी लाइब्रेरी है वहाँ पे ये सब चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले रख सकते हैं. देन इन इंडिया द इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट विच आर नॉट मेनी हैव टू एक्ट एज अ पायोनियर इन द फील्ड फॉर इयर्स एंड जनरेशन टू कम. देखिए यहाँ पे इंडिया या फिर इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो भी है दे हैव टू वर्क इफेक्टिवली एंड दे कैन बी एज अ पायोनियर इन द फील्ड, दैट मीन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर फॉर द इयर्स एंड जनरेशन. जो भी जनरेशन आगे है उनके लिए वी हैव टू शो द पाथ रिगार्डिंग द यूज ऑफ द ड्रग, हाउ टू यूज, विच आर द गुड ड्रग्स, विच आर द बैड ड्रग्स, व्हाट इज द एब्यूज ऑफ द ड्रग्स. तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन है that should be provided by the hospital pharmacist. So this is about the drug abuse teaching program. Here we will conclude our this video. So in this video यहाँ पे हमने इतनी चीजें डिस्कस की है. First of all we have discussed about the education and training program in the hospital. Then internal teaching program, उसमें हमने training of student nurse, seminar of graduate for graduate nurses, house staff and medical staff, then training for undergraduate student in hospital pharmacy, patient teaching program, training clinical pharmacist, training resident in hospital administration, then external teaching program, and we discuss about the drug abuse teaching program. तो ये सभी चीजें that will be come under the education and training program in the hospital. And I want to say that again यहाँ पे हम अगर देखें तो compared to USA and UK we are very behind. बट इवन दो नाउडेज ये अभी रिसेंटली जो भी कोरोना सिचुएशन आई है उसमें भी अगर हम देखें तो हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज है, हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी है दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड ऑल्सो द नॉलेज ऑफ द फार्मासिस्ट. यहाँ पे मैं अगेन ये बोलना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को अगर कंसीडर करें या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो ये सभी का नॉलेज अभी इम्प्रूव हो रहा है. एंड
they are giving this information and they are passing such information to the patient, and for the development, or we can say for the healthcare sector, they are doing very good job. So here I will conclude this video. Thank you for watching this video.